बच्चों, let's read out the question. Read the source given below and answer the questions that follows. Given source को हमें read करना है और 4 questions जो हमारे इस question में given है उसे answer करना है. Source को बड़े clearly पढ़ना होगा ताकि questions हम अच्छे से answer कर पाए because most of the questions directly source से ही पूछे गए हैं. More than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि हमारी कंट्री इंडिया के आधे से ज्यादा वर्कर प्राइमरी सेक्टर उसमें भी एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, लेकिन इतने ज्यादा वर्कर्स के एम्प्लॉयड होने के बावजूद भी हमारी जो इंडिया की जीडीपी है उसमें जो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चरल सेक्टर का वो सिर्फ क्वार्टर है, which means 1/4 of the total GDP is contributed by agriculture. Next, in contrast to this, the secondary and tertiary sectors produce 3/4 of the produce, whereas they employ less than half the people. Contrast में ये कहा जा रहा है कि agricultural sector में सबसे ज्यादा वर्कर्स हैं, बट प्रोडक्शन जीडीपी में सिर्फ क्वार्टर है. On the other hand, secondary and tertiary sectors, यानी industrial and services sectors, ये टोटल जीडीपी का लगभग 3/4 कंट्रीब्यूट करते हैं, बट सिर्फ हाफ से भी कम लोगों का एम्प्लॉयमेंट इन दो सेक्टर्स में है. Now, if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with the proper work elsewhere, agricultural production will not suffer. This is saying कि अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर से बहुत सारे लोगों को निकालकर बाकी दोनों सेक्टर्स में प्लेस करते हैं तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा सफर नहीं करे. Rather, the incomes of the people who take up other work would increase the total family income. Rather, इससे फायदा होगा कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो लोगों का इनकम है उससे टोटल फैमिली इनकम जरूर इंक्रीज करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर डजंट help in that much income as the other sectors do. Since 1991, the construction sector added almost as many new non-farm jobs as the next 4 top job-generating sectors such as trade, miscellaneous services, transport and storage, and education put together. यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 1990 to 1991 इस टाइम से कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट किए हैं लोगों के लिए, नॉन फार्म जॉब्स, दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि टॉप जॉब जनरेटिंग सेक्टर्स जो हैं हमारे ट्रेड, स्टोरेज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन्होंने टुगेदर जितने जॉब क्रिएट किए हैं उतने ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी जॉब क्रिएट किए हैं आफ्टर 1991. While the construction boom in the country has helped people seeking an exit from farm jobs to find an alternative, it has not helped them move to a very productive job. It is saying कि construction industry ने बहुत बड़ा boom create किया by providing people with so many people with jobs. लोग farm jobs को exit करके construction sector join करने लग गए, लेकिन इसकी वजह से लोगों ने ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ लिया, बट लोगों को बहुत प्रोडक्टिव जॉब नहीं मिला. Some economists such as Pranab Bardhan of the University of California, Berkeley, have argued that India's taxation regime has harmed workers by subsidizing investments in capital rather than in labor, and that they should be replaced with labor subsidies. कुछ इकोनॉमिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड बर्कली के, जैसे प्रणब बर्धान इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी बात हो रही है. उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया है कि इंडिया की जो टैक्सेशन रिजीम है उसकी वजह से वर्कर्स को बहुत हार्म पहुंचता है, बहुत लॉस होता है, क्योंकि इंडिया की जो टैक्सेशन रिजीम है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो सब्सिडाइज किए जाते हैं, लेकिन लेबर सब्सिडीज नहीं दी जाती हैं, and that should be replaced. So, key concept for this
whole source that we read was यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की गई, क्योंकि मोस्टली जो हमारा फोकस था वो इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स पे। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चंस वन बाय वन एंड understand what will be the correct answer. Answer the following MCQs by choosing the most appropriate option. First question. What is the ration of production by the secondary and tertiary sectors? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे सोर्स में ही छिपा है। जब हम एक्सट्रैक्ट रीड कर रहे थे तब हमने पढ़ा था दैट agricultural sector contributes only quarter towards the GDP, but the secondary and the tertiary sectors produce 3/4 of the total GDP. So the correct answer for the first question would be 3/4, that is option C. Now let us move to the next question, second question. If we remove a lot of people from agricultural sector and employ them anywhere else, what would happen? अगर लोगों को एग्रीकल्चरल सेक्टर से निकाल के किसी और जगह पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा तो उससे क्या होगा? हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा था, if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with the work elsewhere, agricultural production will not suffer. So the correct answer would be option A, agricultural production would not suffer. Now let us move to the third question, our next question. Since 1919 to 1991, which sector became the next 4 top job generating sector? इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे सोर्स में था कि हमने पढ़ा था कि जो टॉप जॉब जनरेटिंग सेक्टर है उसके इक्विवेलेंट में 1990 टू 1991 के बाद से कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ जॉब्स. कंस्ट्रक्शन सेक्टर एडेड ऑलमोस्ट एज मेनी न्यू जॉब्स, नॉन फार्म जॉब्स एज द नेक्स्ट 4 top job generating sectors. So our correct answer would be for the question 3 is option C, construction sector. Now we will move to the last question, our final question. According to Pranab Bardhan, which regime has harmed workers? हमने क्लियरली अपने क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि प्रणब बर्धान इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये चीज मेंशन किया है, एक आर्गुमेंट दिया है दैट इंडियाज टैक्सेशन regime has harmed workers by subsidizing capital investments and not the labor and has not subsidized labor. So our correct answer for the question 4 is taxation, option C. Now before ending the question answer, we'll just wrap up the question. एक बार सारे answers cover कर लेते हैं. Our correct answers for all the 4 questions are, for the first question option C, 3/4. For the second question option A, agricultural production would not suffer. And third question option C, construction sector. And the last question, fourth question, option C, taxation. हमने सारे questions, 4 questions के answers discuss कर लिए हैं from the given source. I hope you understood well. Best of luck.